Listen carefully. Sir is Dr. V. Kalaishalvan, sir. He is a senior principal scientific officer in Indian Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare, which is located at Ghaziabad, UP, near to Delhi. Sir has got more than 24 years of experience. The most important thing is, sir is pharmacist himself, and he has contribution towards setting up of pharmacovigilance program in government of India in India, and also he was instrumental in development of Indian pharmacopoeial standards and medical device safety. Sir has established implementation of medicinal product safety surveillance system such as pharmacovigilance and meteorology vigilance program of India. Also, as a focal person for WHO, collaborating centers at IPC responsible in execution of work related to strengthening the pharmacovigilance activities in WHO member states. He has also demonstrated to establish a robust system of pharmacovigilance program of India, that is PBPI, which has been recognized by WHO as a collaborating center, played a key role in forging partnership with public health programs, Pharmacy Council of India, academic institutions, WHO, etc., in enhancing the outreach of IPC services. As a WHO assessor responsible to assess the functions of national regulatory system of WHO member states. He has authored 5 books besides more than 110 research and review articles published in various national and international journals, peer-reviewed journals. He has been recipient of fellowship from DST and AICT to pursue research projects as an expert member in working group vigilance of WHO Southeast Asia Regulator Network, and he is responsible for capacity building and strengthening of pharmacovigilance in Southeast Asia region. Sir is a member in other committees also: WHO Advisory Committee of Safety of Medicinal Products, FSSAI, Signal Review Panel of AEFI, Bureau of Indian Standards. And he is also a visiting faculty to NIPER Hazipur. Thank you, sir. This is all about, sir, and over to you, sir. Thank you, respected Professor Shruti Ranjan Mishra ji Sir, and all your team. sir. My dear students, namaste and good afternoon to all of you. Can you hear me? You can Yes, sir, hear? you are audible, sir. आवाज आ रही Students, आवाज आ रही है? Very good, very nice, guys. Thank you so much. So once again, I'm thankful to Professor Shruti and his team. Of course, all of you for choosing me or inviting me to interact with you for some time. Thanks to all of you, and my best wishes and greetings from Indian Pharmacopoeia Commission to all of you. As Dr. Shruti mentioned, I belongs to Indian Pharmacopoeia Commission. I'm working with Indian Pharmacopoeia Commission in past 15 years. Before coming into Indian Pharmacopoeia Commission, I was working with DIPSAR, University of Delhi. Before that, I was in clinical trial for some time. So this is why how my journey started. It's my great honor and opportunity to join with you today during the week long the celebrations of National Pharmacy Week. Actually, you all might be busy in various activities like organizing so many events, so many activities, etc. I think this is very important step you have taken to create awareness among the students. So thanks for the invitation, and I'm happy to join with you all today. And of course, this is my first interaction with any one of the first visit with the Jharkhand. I mean, sorry, Chhattisgarh one. I have been not visited any institutions or any
organization in the state of Chhattisgarh. I think this is my first one to interact with you. So I'll be it will be a great remembrance for me, and it will go a long way for me. So thanks to Dr. Shruti and the entire Dandeshwari group of institutions, faculty members. As mentioned, it's a 62-year pharmacy week we are all celebrating today, I mean the whole week. As a pharmacist, we must understand and we have a lot of social role to play. Apart from the professional activities, we have lots of social responsibility. I will share some of the slides during my presentation. You will come to know what are our social responsibility. In fact, to create future and healthier generation. We all are studying our subject, pharmacy subject, curriculum, and we all are going to be employed somewhere. Or like your professor, you are going to be an entrepreneur. Like Dr. Shruti is one of the entrepreneur now. He's managing his own institute. He's providing a lot of job opportunity for other professionals. So at the end means after our graduation or post graduation, either we have to look for a job seeker or job provider. You may be a job provider, that is entrepreneur, or job seeker. You may be employed or you will be working somewhere. So that is one thing. So here the pharmacy profession itself a service. We are dedicated to the humanity. We are a service provider. We have to be alert, and actually 24/7 our responsibility is there. It's not like other job. If you take other professions, other jobs like lucrative, might be lucrative. Certain limit work period is there, time period is there. But once you become a pharmacist, either you work with the hospital or if you become an entrepreneur, we are service provider. We have to work for 24/7. So I'll tell you why it is required, why it's like that. It's a huge, emerging profession, lot of potential you have. After you graduate or you all are graduates or postgraduates? Graduate, sir. Graduates, very good, very nice. So graduates, I will tell you, then I will go from the scratch, from the base, I will go so that it will be easy for you to understand. So can you share some my slides, or I should share? You can share, sir. How many tests? जस्ट अ मिनट, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से. थिंक जस्ट अ मिनट. हाँ, 1 मिनट. विजिबल है स्लाइड? यस सर, यस सर. थैंक यू. एक्चुअली ये जो फार्माको विजिलेंस कॉन्सेप्ट जो है ना सर, स्टूडेंट्स, आप लोग अंडर ग्रेजुएट में तो आपको सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट कुछ स्टेट्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज में फार्माको विजिलेंस जो है सिलेबस में आ गया है. आपके सिलेबस में है? है सर. देयर इज अ स्पेशल सब्जेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. So elective subject. So yeah, here I want to say that pharmacovigilance means it's a safety of medicines. Whatever medicine we consume, vaccine we used to administer to our children or to our even ourselves or a geriatric population. So medicine or vaccine or even herbal medicine, all should be safe. So that is how the pharmacovigilance. It's nothing but the medicine safety. So here I am going to discuss about the various role of Indian Pharmacopoeia Commission. फार्माकोविजिलेंस के अलावा और भी है, हमारा प्रोफेशंस फार्मेसी प्रोफेशंस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. वो जो है इंडियन फार्माकोपिया.
ये क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के बारे में बुक है. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी क्वालिटी मीन्स क्या होता है? मेडिसिन का क्वालिटी में आपको क्या क्या होना चाहिए? कोई बता सकते हो? Students, anyone, please. क्वालिटी मीन्स क्या है? मेडिसिन क्वालिटी. एक मिनट. क्वालिटी के बारे में आप बता सकते हो? क्वालिटी ऑफ मेडिसिन. सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे. अगर कोई भी फूड आइटम्स बताइए. कोई फूड आइटम आप बता सकते हो? फूड का कोई अपना फेवरेट आइटम बताइए. फूड आइटम अपना फेवरेट फूड एक बता सकते हो? तो नहीं है. एक्चुअली मुझे ना आवाज बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. ये एक बताइएगा. एटलीस्ट एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी योर फेवरेट फूड. दाल चावल. पिज्जा पसंद नहीं करते हो आप लोग? पिज्जा खाते हो ना? पिज्जा आजकल तो आपका फेवरेट है. तो इसमें क्वालिटी क्या होता है? व्हाट आर द क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर एनी फूड आइटम? क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, राइट? जो भी फूड आप बनाते हो उसका क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं? You make any variety rice or you make any biryani items, but whatever rice you have used, that quality is must. That is first one, right? Quality. Then whether it is a pure one or not, it's authentic or not, or it is adulterated with something else. For Otherwise, biryani, you need basmati rice only. Why yes, not other rice? That is quality. you can. Yeah, exactly. That sub is helping me. Thanks a lot. So biryani can be prepared by using any type of rice. But if you use basmati, that quality is good. So here the quality comes. Got my point? Similarly, you take tea. You take tea or coffee as an example. Tea. You take tea. Everybody, of course, everyone will consume tea. If you take tea, color, flavor, odor, everything matters. Then only you can get a good quality tea. Color, odor, everything. So even some of the tea you might have tasted, taste will be good, but there is no color or odor. So this is how the quality matters in the pharmaceuticals as well. That is what I'm trying to say. Quality means it's a various parameters you have to ensure. Just a minute. Again, I'll go to my slide. I will share my slide. Yeah, 1 minute. So when we talk about quality of pharmaceuticals, medicines, I think you might heard about paracetamol. Simple medicines you take paracetamol, diclofenac, azithromycin. So in any medicine you take, it will be written paracetamol IP. आपने देखा है IP कोई भी मेडिसिन में? IP देखा है कि नहीं देखा? पैरासिटामॉल 500 mg IP, पैरासिटामॉल 650 mg IP. IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया. हर दवाई में लिखे जाता है. अगर ये IP स्टैंडर्ड नहीं मेंशन्ड है,
then as per the act, Drugs and Cosmetics Act जो है, it's a violation. If somebody is not following the IP standard, they will be punished. तो यही तो बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. इसमें सारे स्टैंडर्ड्स होता है. इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होगा ड्रग्स के बारे में? एक तो क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अगर पैरासिटामोल टैबलेट है, पैरासिटामोल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना अप्रूव्ड है, और पैरासिटामोल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है. फिर उसके बाद अस्से, उसको आपको क्वांटिफाई करना है, कितना क्वांटिटी परसेंट है. अगर 500 mg आप क्लाइम कर रहे हो तो 500 mg होना चाहिए, अस्से करते हैं. देन इफ इट इज अ टैबलेट फॉर्म, आपको डिसोल्यूशन मैंडेटरी है. इफ अ फिनिश्ड फॉर्मुलेशन इज अ टैबलेट फॉर्म, then dissolution is must. If a finished product is an injectable, then sterility is must. So these are the quality. So when we talk about quality, Indian Pharmacopoeia is the book of standards which contains all quality parameters. Similarly, every monograph will have a reference standard for those things. Reference standard is the highly purified and characterized compound, उसका क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है. Then other function of IPC is to publish a national formulary of India, which is a book of reference book for rational use of medicines, how the medicine is being used rationally. यहाँ पे rational use के बारे में बोलेंगे ना, तो you have to understand how this medicine is used properly. That is called rational use. Correct medicine for correct disease, right disease. उसको बोलते हैं ऑफ लेबल. आजकल ऑफ लेबल यूज भी बोलते हैं ना, जैसे मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर वन पर्पस, बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इट मे बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस. डॉक्टर्स यूज करते हैं अदर पर्पस के लिए. रेशनल यूज का मतलब यही होता है, करेक्ट मेडिसिन फॉर करेक्ट डिसीज, करेक्ट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आई मीन टू से दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसयूज ऑफ मेडिकेशन. सो इसके बारे में ये बुक है, दैट विल गाइड यू how to promote the rational use of medicines. And another last but not the least function of Indian Pharmacopoeia Commission is to manage the pharmacovigilance and material-vigilance program national level, to collect the data, pharmacovigilance data, that is adverse events data because of medicine and because of medical devices, and to analyze the data. So this is about the functions of Indian Pharmacopoeia. अगर फार्मेसी प्रोफेशंस के बारे में बात करोगे तो फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसी फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, rational use and safety of medicines. So these all functions are governed by the Indian Pharmacopoeia Commission. So हर एक व्यक्ति को, I mean every citizen of the country is either directly or indirectly connected with Indian Pharmacopoeia. How the industries are connected with Indian Pharmacopoeia? Because all pharmaceutical industries in India shall require to follow the Indian Pharmacopoeia standards. तो मान लो कल आप लोग भी कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे या खुद इंडस्ट्री बनाओगे, आप दवाई मैन्युफैक्चर करोगे, तो आईपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है. यू हैव टू कंप्लाई विद द आईपी स्टैंडर्ड. Doctors, how the doctors are being connected with IPC? Because every doctor, every nurse, every pharmacist is advised to report the adverse drug reaction, adverse events because of drugs or vaccine or medical devices under the program, pharmacovigilance program or material vigilance program. So doctors and even citizens, common public also connected with IPC. अगर कल कोई भी आपका फैमिली में है या आपके सोसाइटी में है, कम्युनिटी में है, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ मेडिसिन, दवाई की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
to tell them such adverse events should be reported to pharmacovigilance program. This is the responsibility of a pharmacist. It's our social responsibility. इसलिए मैंने पहले आपको कहा था, it's our social responsibility. सोसाइटी में आप हर तरह के लोगों से मिलेंगे आप. So everybody should aware of the pharmacovigilance, adverse events reporting and management. ठीक है. So this is about IPC. Now, as a pharmacist, I think during the pharmacy week celebration, as a pharmacist, we should know what are the better healthcare, improving the better healthcare, and what is the role of pharmacist. Key areas क्या बोल सकते हो आप? Better healthcare और improving healthcare को improve करना है. तो थोड़ा स्लाइड शेयरिंग बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए. मैं आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ. एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू स्पीक. क्या क्या एरिया इंप्रूविंग हेल्थ केयर इंप्रूव करना है? सो आपको क्या क्या एरियाज देखना है? एनीबडी? अभी तो पूरा मैंने आपको बताया. आप कोई हॉस्पिटल जा रहे हो या इंडस्ट्री में जा रहे हो, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ सेक्टर को हमें इंप्रूव करना है. तो व्हाट आर द एरिया आप फोकस करोगे? आपका दिमाग में और आपका प्रायोरिटी में कौन सा रहेगा? हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है तो आइडिया नहीं, कुछ बता सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स? बताओ आपका क्या आइडिया लग रहा है. आपको एक असाइनमेंट या छोटा सा प्रोजेक्ट मिल रहा है. आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुक लेवल में हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है. तो आपको माइंड में फर्स्ट क्या आता है? या आपकी लैंग्वेज में पूछ रहा हूं. अगर मेडिसिन को इंप्रूव करना है, मेडिसिन का जो ओवरऑल अम्ब्रेला जो है फार्मास्यूटिकल. सर क्वालिटी मेडिसिन कैसे देंगे उसको हम. या वेरी गुड. द क्वालिटी इज द फर्स्ट आंसर. एग्री. सर क्वालिटी मेडिसिन कैसे देंगे? एक तो क्वालिटी आपने बताया, सही है. क्वालिटी ऑफ मेडिसिन नीड्स टू बी इंप्रूव्ड. देन सेकंड वन, सर विथआउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड जो ये रहता है उसको कैसे हम कंप्लाई कर पाएंगे उसको देखेंगे. ठीक है. अगर हेल्थ केयर सिस्टम और बेटर हेल्थ केयर को हमें प्रोवाइड करना है, सबसे पहले मेडिसिन में फोकस करेंगे हम लोग. हमारा मेडिसिन में एक तो क्वालिटी हो गया. क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपको जस्ट आई हैव टोल्ड यू क्वालिटी पैरामीटर्स. सेकंड वन, एफिकेसी, वेदर द मेडिसिन इज 100% इफेक्टिव और नॉट. क्योंकि आज के जमाने में आपने देखा होगा कई सारा मेडिसिन जो है 100% क्वालिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एफिकेसी नहीं हो रहा है सर्टेन पॉपुलेशन में, सर्टेन ग्रुप में, बिकॉज ऑफ फार्माकोजीनोमिक फैक्टर. कुछ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, एफिकेसी नहीं है. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, लैक ऑफ एफिकेसी. तो इतना खर्च करके पेशेंट दवाई ले रहा है और इतना मेहनत करके रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करके एक इंडस्ट्री ने मेडिसिन बना रहा है, बट अल्टीमेटली इट शुड बी बेनिफिशियल टू द एंड यूजर. द पर्पस शुड बी सॉल्व्ड. If a medicine meant for or manufactured for the purpose of management of diabetes, it should manage 100%, it should be effective. So efficacy is the second these things. And आपने बोला adverse drug reaction, somebody आपने अभी कहा था, that is also one thing. Safety, that is what pharmacovigilance we talk about. Safety और pharmacovigilance. कोई भी medicines available है, that should be free from risk. कंप्लीट 100% फ्री फ्रॉम रिस्क तो नहीं हो सकता है. इट मे हैव सम बेनिफिट, आई मीन इट मे हैव बेनिफिट, बट इट मे आल्सो हैव सम रिस्क. बट यू हैव टू सी दैट एनी मेडिसिन, while achieving the 100% efficacy or while providing the 100% efficacy,
we have to ensure that it also should be free from adverse effect or side effect risk. Safety is important. Another one, availability. Medicine should be available for all parts of the country. आपने देखा होगा during the COVID pandemic, there are certain medicines were not available because that time the demand was high, demand and supply. So the medicine should be available for all population, irrespective of state or irrespective of religion or irrespective of caste. It should be available all parts of the country. Availability of medicine to all human being. That is one of the main criteria for improving the healthcare. So as a pharmacist, we should understand how we are going to improve the better healthcare, right? Then affordability. Affordability का मतलब मेडिसिन एट अ रीजनेबल कॉस्ट. आपने सुना होगा कार्डियक स्टेंट. कार्डियक स्टेंट का जो प्राइसेस है अराउंड इन द ईयर 2000 बिफोर 2000 17 इट वाज कॉस्टिंग लैक्स में खर्च होता था ये कार्डियक स्टेंट के लिए. 2 lakhs 3 lakhs even more than that the patient has to pay. Now it has come down because of the new medical device rule, new medical devices policy, and commitment from the government of India. It has come down now. That is affordability. That means we should, as a citizen, we should be able to afford the medicine, whether we can able to procure the such devices or not. So that is affordability. So when we see these 5, apart from these 5, अगर आपको लगता है कुछ और भी चाहिए. Sir, yes, sir. May I ask, sir? Please. Sir, nowadays antibiotic resistance is a major problem in the society, sir, because of dose gapping and dose discontinuation and all that factor. Excellent. So how this? Excellent. And this is another area, reducing the burden of antimicrobial resistance, because that is what the rational use will come into the picture. When a medicine is used rationally, judiciously, we can reduce certain level of resistance, because when we require antibiotic, then only we should give. Nowadays, even for common flu, fever, for everything, antibiotic is being prescribed, right? So here the rational use Yes, of sir. antibiotic. आपने सही बोला है. Microbial resistance is the major burden problem for the society, for the country, as a global also. Not only for India, it's a global issue, global problem. So we have to think of how we are going to reduce the burden of resistance, microbial resistance. And otherwise, और भी एक प्रॉब्लम है, जैसे एक्सपायर्ड हो गया ना, एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स है और अनयूज्ड एंटीबायोटिक्स, ये सारे जो है डिस्पोज करते हैं. डिस्पोज मतलब कहाँ डिस्पोज करते हैं? ये इधर दे pumped into the river, or they put into the soil or waste. Again, it is being circulated and it is being consumed either through water or through soil or through animal source, etc. So this is also another problem. So reducing the burden of antimicrobial resistance is also one of the factor. There we require the support of other stakeholder also. Other stakeholder in the sense you require support from policymaker, hospital administration, legal experts, doctor, nurse, pharmacist, common citizen, all of them, all stakeholders are required. But here what I am trying to say, these 5 are the domain of pharmacist. Pharmacists are having a major role to control all these 5 areas of medicines to improve the healthcare. Antibiotic resistance is also a public health problem, but the pharmacist also one of the stakeholder there. Pharmacist cannot be a lead role to play there. That is what I am trying to say.
अभी विजिलेंस और फार्माको विजिलेंस को क्या बोलते हैं? अभी तो आपने क्वालिटी के बारे में थोड़ा मैंने बताया, रेशनल यूज क्या बताया. नाउ लेट अस गो मोर समथिंग सम कुछ रिलेटेड टू फार्माको विजिलेंस और विजिलेंस. ये जो विजिलेंस फार्माको विजिलेंस, whether it is only for drugs or anything else, it is not only for the drugs. आप सेफ्टी देखना है, रिस्क और एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करना है, तो ड्रग्स के अलावा वैक्सीन को भी देखना है, मेडिकल डिवाइस को देखना है. मेडिकल डिवाइस क्या होता है? एनीबडी मेडिकल डिवाइस के बारे में जानते हो आप लोग? Sir, those which are applicable in medical, sir, in operation and all that, sir. जी, मेडिकल डिवाइसेस जो है जनरली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द डिजीज डायग्नोसिस. आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं डिजीज डायग्नोसिस में क्या मेडिकल डिवाइस यूज हो रहा है? डिजीज डायग्नोसिस. Sir, spirometer, like that, sir. जी, डिजीज डायग्नोसिस में जो यूज हो रहा है मेडिकल डिवाइस, इवन योर थर्मोमीटर आल्सो मेडिकल डिवाइस, ग्लूकोमीटर, pulse oximeter, BP monitoring apparatus. So all these things are medical device. Starting from these two, cardiac stent, orthopedic implant, knee implant, prosthetic implant. So all things are medical devices. So ये भी हमारे इंडिया में अभी रेगुलेशन हो रहा है, रेगुलेशन स्टार्ट हो गया है. पहले ये रेगुलेट नहीं करते थे. पहले मतलब 2017 से पहले कोई रूल नहीं था. Any medical device can be manufactured by anybody, but now we have a medical device rule like Drugs and Cosmetics Act 1940 governs various provisions such as marketing, manufacturing, export, import, etc. of medicines. So these things are covered under Drugs and Cosmetics Act 1940. A similar pattern, the medical device manufacturing, approval, sale, distribution, export, import are covered under the new medical device rule 2018. Then we have a traditional medicine, that is herbal medicine, medicines derived from the natural product. That is also important. There also safety surveillance is required. आप कोई बता सकते हो why traditional medicine, why herbal medicines are safety is also important? आप हम लोग तो जानते थे herbal medicines mean safe one, but why क्यों आया मतलब अगर ऐसा इश्यू क्यों आया यहाँ पे? रीजन क्या बता सकते हो आप लोग? हेर्बल मेडिसिन सेफ्टी को, हेर्बल्स को क्यों देखना है? आप हेर्बल मेडिसिन के बारे में जानते हो स्टूडेंट्स? Yes, sir. आई थिंक डॉक्टर साहब आप तो टीचर हो, आप ही सारे को सभी का आंसर आप ही बता रहे हो. अगर स्टूडेंट से कुछ पूछेंगे तो अच्छा रहेगा. हेर्बल मेडिसिन के बारे में जानते हो आप लोग? कौन सा हेर्बल मेडिसिन जानते हो? Please raise your hand. देखिए हेर्बल मेडिसिन यानी कोई भी मेडिसिन बता सकते हो ना. हेर्बल ड्रग, तुलसी, कॉमन तुलसी जानते हो नहीं जानते हो? तुलसी है, many अश्वगंधा which is one of the common very good. Ashwagandha commonly used medicine. I think फार्माकोग्नोसी में तो सारे ठीक है. फार्माकोग्नोसी में तो आपने you might have studied so many medicine, but now the issue is
The problem is we used to study that herbal medicines are safe in nature, but why suddenly it came pharmacovigilance also required for traditional medicine? There are many reasons. Number one, because of pesticide level in the herbal medicines. Nowadays, there is quite good number of pesticides are being used for the cultivation, collection, and processing of herbal medicine. So pesticide because of adverse events, pesticide, then heavy metal. If an extract, herbal extract, then you have to limit your heavy metal content in the extract. Nowadays, a lot of extracts are being used for the treatment of so many diseases. So in the extract, there will be a chance of heavy metal or solvent, residual solvents, because extracts आपको पता है extracts by using कुछ ना कुछ solvents को use करके आप extract निकालते हो. उसमें solvent का residual solvent का limit भी control करना है, because of the level of residual solvents there may be some adverse effect. Pesticide, residual content, heavy metal, and industrial pollutant, because nowadays, because of the industry revolution, the plant may have some pollutant and some chemicals might be absorbed. So this is the reason, because क्योंकि हम लोग अभी recently हमारे experience के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, we used to get some serious adverse effects with the use of Artemisia annua, which is one of the medicine used for anti-malarial natural drug. But because of Artemisia annua, there are some adverse effect. इसको देखते हुए Australia, government of Australia, government of New Zealand, they have put a warning of box warning. While using this Artemisia annua, be aware this may leads to some neurological problems or hepatotoxicity. सो ये जो बॉक्स वार्निंग होता है ना, यूजुअली एलोपैथिक मेडिसिन में आपने देखा होगा बॉक्स वार्निंग होता है. दिस मेडिसिन इज नॉट टू बी यूज्ड एम्प्टी स्टमक, और इफ यू लुक एट द निमुसिलाइड, दिस मेडिसिन नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड बिलो द एज ऑफ 12 years. इट इज नॉट सेफ फॉर बिलो 12 years इन केस ऑफ निमुसिलाइड. सो हर चीजों में वार्निंग होता है. आपने बायोक्लिटाजोन सुना होगा. बायोक्लिटाजोन क्या यूज मालूम है ना आप लोगों को? नहीं मालूम है. डायबिटिक में यूज हो रहा है ना बायोक्लिटाजोन, रोसिक्लिटाजोन, बायोक्लिटाजोन. बायोक्लिटाजोन में वार्निंग आपने देखा, आप लोग देखो अगले बार से अगर बायोक्लिटाजोन कोई भी किसी भी यूज कर रहा हो, आपको फैमिली में हो और कोई भी उसमें वार्निंग होता है, देयर इज मे बी चांस ऑफ ब्लैडर कैंसर. सो दिस वन ऑफ द मेजर आउटकम फ्रॉम द फार्माकोविजिलेंस डेटा, राइट. सो ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट हम लोग जनरेट करके रेगुलेटर को देते हैं. रेगुलेटर स्टेट रेगुलेटर हो, सेंट्रल रेगुलेटर हो, वार्निंग देना चाहिए. सिमिलरली हर्बल मेडिसिन, यहाँ पे एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, हर्बल मेडिसिन आल्सो नीड्स टू बी फोकस्ड like other medicine because of the reason I told you, right? So again I'll go back to my slides. So ये इसलिए जो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सारे मेडिसिन मेडिकल डिवाइस से लेके सभी का सेफ्टी देखना है. एज अ प्रोफेशन फार्मेसी you need to take care of all these things, right? So crisis start when, how it was started actually, this pharmacovigilance practice. They go, it was started from the sulfanilamide elixir actually. There was some of the impurity called diethylene glycol which was present in sulfanilamide elixir, caused some adverse effect, severe adverse effect, death happened because of the contaminant present in the sulfanilamide elixir. So this was the initial journey of pharmacovigilance. This was the eye opening for everybody. Sulfanilamide elixir, actually it happened long back. Then I think this tragedy happened around 100 years ago, around 100 years. So therefore this diethylene glycol is an impurity present in this one. Recently, there are some cough syrup also contains this diethylene glycol impurity, which needs to be controlled actually. Then another example, फार्माकोविजिलेंस क्यों जरूरी है हम लोगों को. जिसे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी आप लोगों ने सुना या नहीं सुना पता नहीं है, बट you should aware now. Thalidomide was a drug used during pregnancy to control vomiting.
देखिए, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल फिनोमिना. उसको रुकना है नहीं रुकना है, इट इज नॉट अ मेजर वन, राइट. उसका वहां पे बेनिफिट देखो, थैलिडोमेड का बेनिफिट है वहां पे बहुत कम है. ठीक है. सो दिस मेडिसिन वाज यूज्ड एज अ एंटी एमेटिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. देन उसके बाद पता लगा बेबीज around 10,000, even more than that, babies were born with some problem, some birth defect, that is absence of lymph node. उसको बोलते हैं फोकोमिलिया. Here focomilia is an adverse effect. Absence of lymph node happened because of thalidomide. So ये हुआ है 1960s में. 1960 it happened, but not in India. It happened in Europe, European countries. उसके बाद जो है अवेयरनेस बढ़ा, फार्माकोविजिलेंस. यस, कोई भी मेडिसिन सेफ, मतलब सेफ तो है बट मतलब बेनिफिट तो है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. देयर माइट बी सम रिस्क. नो मेडिसिन इज फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट. हर मेडिसिन में हैव सम प्रॉब्लम, बट वी शुड एज अ फार्मासिस्ट वी शुड आइडेंटिफाई दोस रिस्क एंड वी हैव टू प्रिवेंट दोस रिस्क. ये अपने मैंने बोला अभी थैलिडोमेड जो है प्रेगनेंसी में ये हो रहा है, ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया. इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? देन यू हैव टू सी द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ दिस मेडिसिन. अगर बेनिफिट मैंने बताया, बेनिफिट इज जस्ट फॉर एज एन एंटी एमेटिक. वॉमिटिंग को रुकना है प्रेगनेंसी में, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. वॉमिटिंग हो रहा है प्रेगनेंसी में, दैट इज अ कॉमन फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना. वो बेनिफिट वहां इतना नहीं है, बट रिस्क देखो कितना बड़ा रिस्क है. इसलिए ये मेडिसिन बैंड हो गया, बंद हो गया था एज एन एंटी एमेटिक. सो यही फार्माकोविजिलेंस है. सो एज अ फार्मासिस्ट हम लोगों को रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को इवालुएट करना है, और बेनिफिट रिस्क रेशियो को देखना है. कोई भी मेडिसिन आप मतलब रेगुलेटर, हम लोग वी आर नॉट अथॉरिटी और वी आर नॉट सपोज टू बैन एनीथिंग. दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट रेगुलेटर और मीन सेंट्रल रेगुलेटर, CDSU. But as a professional, we need to collect the information. We need to provide this information data to the regulator or IPC to analyze the information. So thalidomide is the one of the best example why a country or a system required a good pharmacovigilance system. Otherwise, future it's a question to the future generation. Future generation को हम लोग spoil कर रहे हैं. We are not producing healthy child. So this is what the pharmacovigilance started. Thalidomide tragedy was started. Then the WHO, World Health Organization, started a program, international program called the International Drug Monitoring Program. And this program is coordinated by or managed by the Uppsala Monitoring Center at Sweden. Is responsible for developing a reporting form, a reporting tool, and collecting the data from all over the globe, not only India, from all over the globe. Currently, 177 countries are participating in this program, including India. Each and every country is collecting the data and providing to WHO global database. So we are also one of the country participating in the WHO program. So this program started after thalidomide tragedy. एक्चुअली ये ड्रग्स के बारे में तो मैंने ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, आप गूगल करके देख सकते हो थैलिडोमाइड रिस्क एंड बेनिफिट. सो इट इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड पर्टिकुलरली अभी तो ये मेडिसिन अवेलेबल है फॉर एंटी कैंसर. दिस मेडिसिन इज not available as an anti-emetic drug, but this thalidomide is available or used as an anti-cancer drug and even in the leprosy. So वहाँ पे भी
वुमन, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप वुमन और प्रेग्नेंट वुमन को ये देना नहीं चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि देर आर सम अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन। थैलिडोमेड के अलावा और कैंसर ड्रग्स भी है, एंटी कैंसर ड्रग, वो हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट थैलिडोमेड वहां पे भी लेडीज को यूज नहीं करना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, दीज आर द चिल्ड्रन born with some birth defect। बर्थ डिफेक्ट क्या है आप देख सकते हो, कितना ट्रेजेडी हुआ है। इसलिए हर मेडिसिन आज के जमाना में भी, थैलिडोमाइड जैसे ड्रग्स अभी भी अवेलेबल है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैंने पहले भी आपको बोला, एज अ फार्मासिस्ट इट्स नॉट अवर, इट्स बियॉन्ड अवर प्रोफेशनल एक्टिविटी, देयर इज लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटी विच वी हैव टू डू इट। सो ये सारे केस स्टडी है अबाउट थैलिडोमाइड। So you can avail this information, you can access this information also in the Google। ये जो देख रहे हो ना, द पिक्चर में जो है प्रोफेसर पार्थसारथी करके एक हमारा फार्मेसी प्रोफेसर है, वो हमारे साथ में काम किया है। इन्होंने विजिट किया था WHO जेनीवा। दीज टू आर द थैलिडोमाइड विक्टिम्स। ये जो जेंटलमैन एंड वुमन बोथ आर affected, suffered by using the थैलिडोमाइड। तो WHO ने इन लोगों को बुलाया मीटिंग में, हॉनर किया, फेलिसिटेट किया है, बिकॉज दे सर्वाइव्ड एंड दे फाइटेड द कॉज एंड दे आर नाउ, they are the real messenger or ambassador for this pharmacovigilance। So big tribute and salute to them। ये जो फार्माकोविजिलेंस का सेफ्टी है, फार्माकोविजिलेंस का मतलब इट्स अ ड्रग सेफ्टी। बिकॉज ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ डिसीज, ओके, अनअवॉइडेबल, बट मेडिसिन की वजह से आप किसी का डेथ हो रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और मेडिसिन की वजह से सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो रहा है और परमानेंट विजन लॉस हो रहा है, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू प्रिवेंट सच एडवर्स इवेंट एंड टू कम्युनिकेट सच एडवर्स इवेंट्स। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, फार्माकोविजिलेंस मींस क्या होता है, सेफ्टी, नथिंग बट इट्स अ सेफ्टी मॉनिटरिंग, बट इट्स अ सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम। कैसे आप एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करोगे, दैट इज द डिटेक्शन। असेसमेंट, यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ असेसमेंट, हाउ द एडवर्स इवेंट इज बीइंग असेस्ड। एनीबडी कैन रिपोर्ट एनी एडवर्स इवेंट, but we as a pharmacist, we should help the system. We should clear whether the adverse event is because of medicine or because of disease or because of some other reason। ये तो नहीं हो सकता ना, कोई भी पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारे एडवर्स इवेंट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, ये तो नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। समटाइम्स इट मे, समटाइम्स मे नॉट बी रिलेटेड। देखिए ड्यूरिंग कैंसर में क्या कॉमन एडवर्स इफेक्ट है? वॉमिटिंग इज द कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन कैंसर, राइट? बट वो मेडिसिन की वजह से वॉमिटिंग नहीं होगा, राइट? सो ये हमारा असेसमेंट है। और मेडिसिन का असेसमेंट करोगे जब मेडिसिन का हाफ लाइफ भी देखना होता है। से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट, आपका छत्तीसगढ़ से मान लो कोई पेशेंट आपको रिपोर्ट कर रहा है, पेशेंट ने कल सुबह, yesterday morning, a patient took paracetamol, and say for example the patient is complaining tomorrow about some adverse effect because of paracetamol। क्या, कैसे आप असेस करोगे? क्योंकि पैरासीटामोल का हाफ लाइफ है 6 आवर्स मैक्सिमम। अब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है आफ्टर 48 आवर्स, इसको बिल्कुल दिस एडवर्स इवेंट नॉट रिलेटेड टू पैरासीटामोल। ये असेसमेंट होता है हर मेडिसिन में, हर मॉलिक्यूल का आपको देखना है उसमें क्या रूट काज है, देन अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंशन, ये सब पार्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ये जो हिस्ट्री मैंने आपको बताया, जो फार्माकोविजिलेंस कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे कंट्रीज उसको अडॉप्ट किया है एज अ रेगुलेशन, क्योंकि ये जो ड्रग एक्ट में नहीं आएगा ना, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। सिमिलरली द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी, हमारा एक्ट भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो गया है
फार्माकोविजिलेंस इज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन और पार्ट ऑफ सिस्टम नो, ये जो है पूरा डेवलपमेंट है। एंड हर एक कंट्री को क्यों चाहिए और एडीआर रिपोर्टिंग क्यों करना है, एडवर्स इवेंट क्यों हमें रिपोर्ट करना है, मॉनिटरिंग क्यों रिक्वायर्ड है। से फॉर एग्जांपल एनी मेडिसिन बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट it was subjected to various phases of clinical trial. Phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4 is post marketing surveillance. So without clinical trial data, the regulator will not approve this medicine to be available in the market. So marketing approval is based on the clinical trial data, one of the clinical trial data. So during the clinical trial, you know, not all adverse drug reactions are captured or not reported or not detected. When a medicine is being used, prolonged use, longer period of time, there may be a chance of occurrence of more number of adverse events which we could not able to detect during the clinical trial. लॉन्गर पीरियड में ही पता लगेगा क्या इसका इफेक्ट है, बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल तो शॉर्ट पीरियड में करते हैं। एंड मोर ओवर क्लिनिकल ट्रायल जो है वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स में होता है। से फॉर एग्जांपल 3000 or maximum 5000 human subjects are involved in the clinical trial. इतना लिमिटेड नंबर में सारे एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन अ मेडिसिन इज available in the market and it is being used in larger population or under all population, then you will come to know what kind of adverse events are being reported. So therefore pharmacovigilance is required after even approval also, longer period also you have to monitor. So that is what a pharmacovigilance system is required for all of us. And why in India? ऑलरेडी मैंने आपको बताया फार्माकोविजिलेंस सिस्टम WHO के पास में है, तो स्टिल वी रिक्वायर अ सेपरेट सिस्टम फॉर आवर कंट्री? यस, बिकॉज देयर आर सम मेडिसिन्स used in our own population which may not be used in other population. Say for example, some disease you take like leishmaniasis, kala azar, which is one of the disease most prevalent in Jharkhand, Odisha, Bihar, some states in Bihar, West Bengal. And this is the disease, and here the medicine is used, miltefosine is the medicine. But here in such case, you cannot ask the data from US or Europe, because here we have a different disease pattern. So we need to have our own database and different pharmacogenomic factor as compared to other countries. And medicine manufacturing process, storage facility, because country like in India, we have different climatic conditions. If you go to Rajasthan during summer, even 47-48 degree temperature is there. So in such temperature, there may be chance of deterioration of a medicine. Of course, vaccine तो हो जाता है, vaccine तो इतना temperature में नहीं रख, vaccine तो always to be stored in a cold. But even sometimes medicine also may deteriorate. But if you look at European, they are almost uniform pattern of temperature is maintained. But in India, we have a different temperature. So there are many reasons we need to have our own system, our own pharmacovigilance data to monitor the safety. That is how these two programs, pharmacovigilance and material vigilance program. Material vigilance is the program to monitor the safety of medical devices. Here I am not going to tell you detail about the medical device, but medical devices are also covered under the pharmacovigilance, system. Adverse event monitoring. Under the program, we have a monitoring center. Say for example, in your state also, Chhattisgarh also, AIIMS Raipur, Chhattisgarh, and other medical colleges are also involved in this pharmacovigilance activity. So primarily, they will be responsible for collecting and reporting the adverse events used in छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन। मैंने पहले भी आपको बोला था, जैसे थैलिडोमाइड जैसे ड्रग्स अभी भी अवेलेबल है, नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो सोडियम वॉल्प्रोएट है, आई थिंक दिस मेडिसिन इज यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, but it is not safe
for the childbearing age group women. Again, the issue is reports are available that there are some birth defects are reported because of sodium valproate, because of those females were using sodium valproate during pregnancy for the treatment of epilepsy. So here again, it's our kind of social responsibility beyond your professional thinking. You think of the humanitarian aspect, you think of the future generation, healthy nation as a social responsibility. If somebody, some woman, any woman is using sodium valproate at the age of pregnancy, I mean childbearing age group woman, child group bearing age group woman is defined as from the age of 18 to, say for example, around 35 or 40. सो इसी एज ग्रुप में कोई भी यूज नहीं करना है सोडियम वालप्रेट को, देर आर चांस ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ये जो अभी वो रिसेंटली जो अवेयरनेस हो रहा है, हम लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन। आई शुड spread this information for the betterment of the community. I think that was my last slide. मैंने तो स्लाइड्स तो कंप्लीट हो गया है, बट ओवर टू प्रोफेसर श्रुति एंड आवर ऑर्गेनाइजर्स फॉर उसको आगे बढ़ाने। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much for so simply and beautifully explained our student and teaching staff regarding the pharmacovigilance, and also very beautifully you have explained what is Indian pharmacopoeia, what is reference standard, impurity standards and all, national formulary, and PBPI and MBPI programs. मुझे लगता है इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से कोई शायद ही स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किए हो। थैंक यू। मुझे ना आप एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मुझे इतना हिंदी आप जैसे हिंदी अच्छा नहीं बोलता हूँ मैं, फिर भी यू मे बी एक्सक्यूज्ड इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स इन माय प्रोनाउंसिएशन। इट इज ब्यूटीफुल सर, कम्युनिकेबल है आपका हिंदी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मेरा भी हिंदी वैसे ही है, बट एनीवे आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया बच्चों को। एंड रिगार्डिंग डिवाइस, एक्चुअली डिवाइसेस के बारे में बहुत सारे बच्चों को हमारा पता नहीं था, दो दे आर यूजिंग pulse oximeter, thermometer, glucometer, all, but ज़्यादा information नहीं था। So beautifully you have explained about this herbal medicines, why it has to be under pharmacovigilance, this thing, ये जो आप heavy metal का presence हो सकता है, ये सब के बारे में जो, या residual impurities हो सकता है, इसके बारे में समझाए। So it was simply beautiful, sir. Thank you very much for coming and giving your valuable time to this very remote part of India. Chhattisgarh, Bastar district, Koraput district of Odisha are really in the backward areas. But now, because thanks to technology, we could able to hear from you. You are sitting at Delhi and we are at Jagdalpur. But I don't found that any problem is there. So sir, thank you very much. मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। I know the आपके समय का ये मैं जानता हूँ। But sir, our request from our student, staff and management that we will be inviting you physically to Jagdalpur, and we will see to it that all the students of Chhattisgarh will unite here, and we need your presence and your deliberations. It's my pleasure to be associated with you. As I mentioned, it's my first interactive session with yes sir. Yes sir. I know sir, in 2014 you had come to Orissa along with Dr. Singh. Yes, and it was a good get together, and our still that was memorable event. I am sure this is also going to be a memorable one. Yes sir. Yes sir. Thank you very much. Sir, this is a small certificate of appreciation for you. It is of course online. The physical copy I will be sending to you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you so much, and wish you all the best. Thanks to all of you. Thank you.
Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much, dear friends, students, and my dear faculty.